Our top focus story is about the second phase of the odd-even plan. And this time, it's going to be even more challenging to implement. It's even more crucial. Why? Schools are functioning. Remember, in January, schools were shut. It's very hot. It's 40 degrees and counting. And what does this mean? That those in this odd-even scheme will actually have problems in that hot sun when they don't have their vehicles. Is the public transport system geared up for this? There are some tough questions that Delhi's Transport Minister Gopal Rai has to answer, because schools perhaps will have to change their timings. All of this is still being worked out. So is the Delhi government pushing too hard on a half-baked scheme? Let's find out. If you're in Delhi, then buckle up for even odd version 2.0. Come 15th April, the Delhi government will roll out the vehicle rationing scheme to check pollution again. Like last time, the exemptions stay. Single women drivers, two-wheelers are exempt. But this time, parents carrying kids in school uniforms will also be exempt. जहाँ तक टू व्हीलर की बात है, टू व्हीलर को जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं हो जाता, क्योंकि वो एक बड़ी तादाद है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती है, तो नई बसों को लाने का सिलसिला अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होते ही हम टू व्हीलर को भी इसमें ले आएंगे। But even before even odd phase 2 kicks in, the plan hit a roadblock. Earlier in the day, the Delhi Transport Corporation decided to discontinue its school bus service to private schools to meet the extra load it would have to deal with during phase 2 of the even odd plan. Now, schools have been asked to alter timetables to ensure DTC buses are on the roads for general commuters by 8 a.m. डिपो से बसें स्कूल बस निकलती हैं, करीब 6 साढ़े 6 बजे निकलती है और करीब 7:30 तक स्कूलों में पहुंच जाती है। 8 बजे तक जो पीक आवर्स जब शुरू होते हैं, ये बसेस दोबारा लाइन पे आ जाएंगी। Politics too seems to have begun on the issue. Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan had on Tuesday hit out at the Arvind Kejriwal-led Delhi government, saying it had used the even-odd scheme to gain cheap publicity. In January, Delhi had given a big thumbs up to the even-odd scheme. The big question is, will it meet with similar success this time around too? Bureau Report, India Today. And the question that people in Delhi are asking, is the government ready for odd-even plan part 2? Is the Arvind Kejriwal government ready? Because the challenges are much bigger in round 2. Why? It's much hotter. Temperatures already hovering around 40 degrees and more. So it's the heat. Point 2, unlike in January in phase 1, no extended holidays, no weekends, extended weekends this time in phase 2. How will Delhi cope with the pressure on the public transport? The schools will remain open. 1,000 additional DTC buses will be required for schools which weren't required in January. Is DTC geared up for it? Also, 8 to 10% increase in metro travel. Is the metro geared up for this challenge? Now, Gopal Rai, Delhi's Transport Minister, thinks so. He's joining me on the broadcast and we'll put these questions to him. So Delhi is getting all set for phase 2 of odd-even plan, and the Delhi government itself is calling it odd-even dobara. But aren't the problems also intensifying now? More problems than last time. How does the Delhi government intend to find solutions? Joining me now on the broadcast is Delhi's Transport Minister Gopal Rai. Gopal ji, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पर। पहला प्रश्न आपसे गोपाल जी, गर्मियां हैं, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान राजधानी दिल्ली में अभी से है। समस्याएं ज्यादा बड़ी इस बार पिछली बार से? निश्चित रूप से पिछली बार जब ऑड इवन 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में लागू हुआ था, उस समय ठंड का मौसम था। हमारे सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के लिए चौराहों पर खड़ा होकर के गांधीगिरी करना, लोगों को अवेयर करना, फूल देना, पैम्पलेट देना काफ़ी आसान था। ट्रैफिक पुलिस के लोगों को अपनी ड्यूटी करना काफ़ी आसान था। लेकिन इस गर्मी में निश्चित रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन हमें उम्मीद है
कि इस बड़े पर्पस के लिए, दिल्ली की जिंदगी को बचाने के लिए हम मिलकर के इसे सफल करेंगे। अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि स्कूल इस बार खुले हैं, वो लॉन्ग वीकेंड नहीं है, तो आखिर स्कूली बच्चे जाएंगे कैसे अगर ये ऑड इवन प्लान होगा, क्योंकि डीटीसी की बसें उनके पास नहीं होंगी 8 बजे के बाद। देखिए, अभी निश्चित रूप से पिछली बार 15 दिनों में स्कूल बंद थे और इस बार स्कूल खुले हैं। दिल्ली सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अवसर भी है कि हम पूरे जब सर्वे हम कर रहे थे, लोग मांग कर रहे थे इसे परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन हमने पहली बार 1 से 15 का अनुभव लिया था और अब 15 से 30 का है। पहली बार स्कूल बंद थे, इस बार स्कूल खुले हुए हैं, तो इसको लेकर के सरकार प्लान कर रही है। अभी जो डीटीसी की बसें स्कूलों में जाती हैं वो सुबह जाएंगी और 8 बजे सड़क पर आ जाएंगी, फिर दोपहर में जाकर के बच्चों को छोड़ेंगी। लेकिन इससे बड़ी चुनौती है जो गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं। इसके लिए सरकार अभी ये तो प्लान सोच रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मीटिंग हुई, सारी रिव्यू मीटिंग, सब पे चर्चा हुई कि जो ड्रेस कोड में बच्चे होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अभी उलझन है जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दिल्ली के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, हम सुझाव चाहते हैं कि जब बच्चों को लेने जाएंगे पेरेंट्स, उस समय बच्चे नहीं होंगे गाड़ियों में, किस आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्या मेथड अपनाया जाए कि जब गाड़ियों में बच्चे ना हो, जब गार्जियन छोड़ के आ रहे हों या लेने जा रहे हों, उस दौरान क्या मैपिंग रखा जाए जिससे कि उनको छूट भी मिल सके और कोई इसका दुरुपयोग भी ना कर सके। मैं जरूर चाहता हूं कि आपका चैनल इस पर लोगों की राय भी गैदर करे जिससे कि हम लोग इसका रास्ता निकाल सके। निश्चित तौर पर यह प्रश्न हम जनता से भी करेंगे कि क्या इस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है। लेकिन गोपाल जी, एक समस्या और भी है। समस्या यह है कि स्कूली बच्चे कह रहे हैं कि 40 डिग्री तापमान में स्कूली बसें, अगर उन्हें स्कूल की बसें नहीं मिलेंगी दोपहर में, तब फिर वो क्या करेंगे। मेट्रो में 10% इंक्रीज पिछली बार देखा गया था जब छुट्टी थी। मेट्रो क्या और ये बोझ ले पाएगी, इस पर आपने क्या अभी स्टडी की है? देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि डीटीसी की बसें जो प्राइवेट स्कूलों में जाती थीं वो पहले के ही मुताबिक जाएंगी। सुबह वो बच्चों को छोड़ करके 8 बजे अपने रूट पर आ जाएंगी और दोपहर में फिर वो स्कूल में जाकर के उनको घर में छोड़ करके और फिर शाम को जो है वो जब पीक आवर होता है वो सड़क पर आ जाएंगी। तो डीटीसी की जो सुविधा बच्चों को थी वो मिलती रहेगी। सरकार की तरफ से मैं एश्योर करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक जो है मेट्रो की बात है, मेट्रो ने अपनी तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं और हमें उम्मीद है, पिछली बार भी मैंने काफी मेट्रो में हमने मॉनिटरिंग की थी कि पिछली बार भी जब मंडे आया था और फुल जब लोग अपने ड्यूटी के लिए और फुल आवर्स था, तब भी मेट्रो ने लोगों को सुविधा दी थी और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो सके। लेकिन मैं फिर वही बार बार मैं कहता हूं, ये जो जंग है ये दिल्ली वालों के दिल के ऊपर है, दिल्ली वालों के सहयोग से है। उनको थोड़ी तकलीफ उठानी भी पड़े तब भी उन्हें इस पूरी लड़ाई को जीतना है। जिस तरह से पहली बार लोगों ने सफल किया, इस बार भी उन्हीं के हाथ में है इसकी सफलता और असफलता। इसका लक्ष्य क्या है? क्या इसका लक्ष्य पर्यावरण है या इसका लक्ष्य सड़कों पर ट्रैफिक को कम करना है? क्योंकि ट्रैफिक भले ही कम हो, पर्यावरण पर असर, इस पर दो तरह की राय रही है गोपाल जी। कुछ लोग कह रहे हैं पर्यावरण में कुछ सुधार आया था, आपका यह मानना है, लेकिन कई और कह रहे हैं कि पर्यावरण पर कोई अच्छा असर नहीं हुआ इसका। देखिए, पहली बात तो यह है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन बहुत सामान्य सी बात है कि अगर दिल्ली में 20 लाख गाड़ियां जितना प्रदूषण पैदा करती हैं, ये तो सबने देखा कि आधी गाड़ियां सड़क पर थीं जी, तो आधी गाड़ियां जो पोल्यूशन पैदा करती थीं वो गया कहां पर? वो कहीं गया तो नहीं, वो दिल्ली के अंदर रहा। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जब कंजेशन कम होता है तो जो गाड़ी 1 घंटे सड़क पे पेट्रोल डीजल जलाती है वो आधे घंटे चलाती है। और ये तो पूरे दिल्ली ने चिल्ला करके इस बात को बताया है कि जहां हम 2 घंटे में पहुंचते थे 1 घंटे में पहुंचे थे, जहां 1 घंटे में पहुंचते थे आधे घंटे में। तो जो टाइमिंग कम होती है, जब 30% से 35% पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है, तो उससे जो प्रदूषण पैदा होता है वो कम हुआ। अच्छा, लेकिन अगर आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण और कंजेशन दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर आप प्रदूषण की असल में बात कर रहे हैं, इफ पोल्यूशन इज द की,
why are two-wheelers not exempt? Why are two-wheelers exempted? Two-wheelers are the biggest producers of pollution. तो ये जो दोपहिया वाहन है, इनको क्यों नहीं आप ऑड इवन के घेरे में, दायरे में ला रहे हैं? देखिए, मैंने पहली बार भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं, हम लोगों की पहले दिन से यह मान्यता है कि इस दायरे में टू व्हीलर्स भी आने चाहिए, लेकिन सवाल इसकी प्रैक्टिकलिटी का है। दिल्ली सरकार ये प्रयास कर रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पैरेलली मजबूत करें। ये मई के बाद से दिल्ली में नई बसें आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इतना स्ट्रांग कर देंगे कि टू व्हीलर को भी जब हम इस दायरे में लाएंगे तो टू व्हीलर वाले बसों का अच्छी तरह से सफर कर सकें। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत न होना, वरना अगर आज मजबूत होता तो आज हम इसके दायरे में लाते, जिससे कि जो पोल्यूशन लेवल है और बेहतर तरीके से है उसमें कमी आ सके। आपकी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने में क्या कदम उठाए हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक? पहला सवाल। दूसरा सवाल, साइकिल ट्रैक बनाने की बात तो होती है, उस पर कार्यान्वयन कब होगा? देखिए, पहली बात यह है कि ऑड इवन के बाद से दिल्ली सरकार ने अभी हम फर्स्ट फेज में 1000 नई बसें मई के बाद से लाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उसके लिए हमने नए डिपो 6 नए डिपो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी पहले डिपो का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं और पैरेलली और डिपो बन रहे हैं। तो हमने 1000 बसों के लिए डिपो का इंतजाम कर लिया है। 1000 बसों का टेंडर हो चुका है, 1000 बसों का ऑर्डर हो चुका है और मई के बाद 1000 बसें दिल्ली की सड़कों पर आने जा रही हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिल सकेगी, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के अंदर जितनी बसें हैं उसमें आज की तारीख में हम 4000 मार्शल बसों में हम लगा चुके हैं, जिससे कि लोग सुरक्षित तरीके से बसों की यात्रा कर सकें। नंबर 3, दिल्ली के सभी बसों में हम अभी टेंडर करने जा रहे हैं। उनका सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, जीपीएस सिस्टम का हमारा पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम टेंडर करने जा रहे हैं। नंबर 4, डीटीसी की सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन का लगना शुरू हो चुका है और ये मई लास्ट तक हम सारा कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम कॉमन मोबिलिटी कार्ड लाने में सक्षम हो पाएंगे। एक ही कार्ड से दिल्ली वाले मेट्रो में भी यात्रा कर पाएंगे, डीटीसी में भी यात्रा कर पाएंगे, क्लस्टर में भी यात्रा कर पाएंगे। तो ये सारी सुविधाओं को देने का जो सिलसिला है वो पिछले और अब के बीच में एक मजबूती प्रदान कर चुका है। गोपाल राय, फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे ऑन पार्ट 2 ऑफ ऑड इवन प्लान, मेनी थैंक्स। The Delhi government has big plans, but will they remain on paper is the big questions. There's a big question. There are many challenges. We will continue to track that story very closely. But for the moment, let's quickly cut across and take a look at some other stories that are making the headlines on India Today. The 2008 Malegaon blast accused Lieutenant Colonel Prasad Purohit is now fighting to restore his honor. Colonel Purohit has been in jail for the past 7.5 years without bail. He has now written to Defence Minister Manohar Parrikar seeking the restoration of his military rank, honour, service and seniority. He claims that the National Investigation Agency is probing a Lashkar-e-Taiba link to the Samjhauta Train Express blast, and that too proves his innocence. The centre has filed an affidavit in the Uttarakhand High Court defending the imposition of the President's rule. The government has reiterated that the constitutional machinery had broken down in the state. The Congress claims the BJP subverted the constitutional machinery. A young mother reportedly killed her 23-day-old baby in Hyderabad, allegedly because she wanted a girl. The woman has told the police that the boy died when he fell down when unknown men tried to snatch the baby. But subsequent investigations revealed that the woman wanted a girl child and had killed her son. India Today investigations into the chemistry paper leak in Karnataka have revealed that many ringleaders from the board were involved in the paper leak. 2 among the ringleaders have now been identified. Sources say the police is set to make a series of arrests that took Bengaluru by storm.
Superstar Salman Khan has asked the Supreme Court to dismiss Maharashtra government's petition challenging his acquittal in the 2002 hit-and-run case. Salman Khan insists the police are trying to frame him in a false case. But now I want to focus on the Delhi hit-and-run case. Remember, yesterday we told you about that big story. A speeding Mercedes-Benz in the upscale civil lines area of North Delhi. It mowed down a youngster, shattered his life and his family's dreams. Now, the Delhi police have acted. They've arrested the juvenile driver's father. The juvenile was also arrested. His father has been taken into custody for letting the minor drive. The juvenile came out on bail. But the victim's family is alleging foul play because the Mercedes driver, his family, are very rich and powerful, they allege. He was a brother. He was a son to loving parents, and in seconds, his life was brutally cut short by a careless teenager. With no time to cope or mourn his death, his family is now left fighting a lone battle for justice for Siddharth Sharma. Siddharth's family has been fighting for the accused to be jailed. They allege that the cops are going soft on the accused. So far, there were no arrests, and then I heard there was this driver who came up and said that he was driving the car. But we know, we have met and spoken to a lot of people, those who were locally there. The accused minor who was apprehended managed to secure bail in no time and was out of trouble. But his father has been booked for letting his underage son drive their car. Father of the accused, who is a businessman, since he has given the vehicle to a juvenile driver, he has also been booked under sections of MV Act and he has been charge sheeted accordingly. But even if the police do take the accused driver into custody, his juvenile status could just let him walk. The hit and run took place 5 days before the accused turns 18, so he will not be tried as an adult, and the Juvenile Justice Board will decide his punishment, which means he could get away with simply coughing up a fine. If a person is capable of killing a man and making a run for it, can he still be treated as a juvenile? Is it time now to fill the gaps where a number won't let a person get away with a grave crime? Bureau Report, India Today. Siddharth's family is very upset. They are saying that because the accused is a juvenile, he's practically getting away with murder. Even his father, even if he remains in jail if convicted, would only be for 3 months. Is this punishment enough? I want to quickly bring in India Today's Deputy Editor Atir Khan, who joins me with the latest on the story. Atir, what have police investigations revealed so far? Well, you see, the police have initiated all possible action which they could within the limits of law. They have proceeded against the juvenile as per the Juvenile Justice Act. They have also, significantly, and this is something which is really, sort of invoked. The Motor Vehicle Act has been invoked in the case of the father for allowing the juvenile to take away the car, and which led to this accident. So under this provisions, Gaurav, the police have proceeded, but the action has to be taken by the court. Now it will be taken in front of the court, and court can decide on this, and a punishment, imprisonment of up to 3 months can be imposed if the court desires so. The police, we are also learning, is going to initiate action against the driver who tried to mislead the investigation in the case. So that is likely to happen soon, maybe tomorrow or day after. The police are trying to, put together the loose ends in the case so that they have a foolproof case in the court of law. Okay, Atir, keep tracking that story. I will come back to you for more. Was the driver doing this on his own, or did this extremely rich and powerful family, as the victim's family insists,
actually force him to do that? And should they then also not face trial for trying to mislead investigations? We'll be tracking that story closely. But for the moment, I want to talk about the WhatsApp case. Now, whatever WhatsApp you send now, whatever messages you send via WhatsApp, they will be completely secure. More encryption, end-to-end encryption, and this means that even security agencies will not be able to see those messages. That is something that service provider wants to ensure. But will they fall foul of the security agencies in India remains the big question. Following the controversial face-off between Apple and the United States FBI over how much access law enforcement should have to digital communications, WhatsApp's parent firm and social media giant Facebook has cranked up the security settings on the massively popular WhatsApp chat application. Chances are you've noticed the encryption message in your WhatsApp chats. This is good news if you have been worried about the privacy of your messages. Well, say hello to all new encryption for all your messages. They have now been fully secured from hacking. Your chats are now secure from cyber criminals too. And in case you're wondering, your calls and group chats are secure too. If you're on the latest version of the app, all chats will be end-to-end encrypted automatically. But remember, the safety feature is available only when you as well as those you're chatting with are using the latest version of. Remember, WhatsApp will also allow you to check whether your calls and messages are end-to-end encrypted by adding a lock symbol in contact or group info. The lock symbol represents end-to-end encryption, while the unlock symbol will mean your messages can be read by third parties. So yes, WhatsApp makes your messages much more secure. Not even WhatsApp can access them. However, if a situation arises where the government agencies ask WhatsApp to grant them access to an individual's WhatsApp account, then it would be interesting to know what stand Facebook, the owner of WhatsApp, takes. Would it go the Apple way or would it relent? So end-to-end encryption, that means not even the service provider would be able to read these messages. So your messages are safe, but let's look at the dark side of this. Let's be the devil's advocate here. What if anti-national elements are using this service? Conversations about illegal transaction, sexual and criminal intimidation, porn and child porn. What if that is being communicated via WhatsApp? The security agencies wouldn't know, the criminal investigation agencies will not know. What if terrorists use WhatsApp to communicate? Intelligence agencies will just not know. Spread of hatred and communal messages. Remember, in the past, this has been used. WhatsApp has been used to spread hatred. What if that were to happen? That remains a big question. And let me pose this question to India Today's editor, Shiv Arur, who joins me with the latest on this. Shiv, the security agencies want to keep an eye on communication, and they said so as far as BBMs were concerned. What about WhatsApp? You know, that really is the big question, Gaurav, and unlike BBM, which had a certain section of users around the world, WhatsApp recently clocked more than 1 billion users all around the world in every single country. More than 1 billion users use WhatsApp. Trillions of gigabytes of data, photographs, video, messages, audio are transferred through WhatsApp every single day. Now, the graphic that you just put on air for our viewers, I think that's the real heart of this debate. Now, Apple did not relent to the FBI in the San Bernardino case when the FBI wanted to access messages in the iPhone belonging to the people who were involved in that terrorist attack. But what WhatsApp has done now is it has pretty much preempted the debate. It has moved one step forward of the debate and added this end-to-end encryption, which means that even if law enforcement agencies want to unilaterally access messages on WhatsApp, or video or audio or any other kind of content being exchanged on WhatsApp, they cannot do it. Now, if they actually, seek permission through WhatsApp, that appears to be a gray area at this point of time. Like Gaurav said in that story, it remains to be seen whether WhatsApp will follow the example of Apple and resist all pressure by the government to, provide access to such information. But be that as it may, the application itself, if you and I are
having a conversation on WhatsApp, we can be certain that no third party can actually access those details without seeking clearance from WhatsApp. Because even WhatsApp itself and Facebook, the parent company, have no permission anymore to access it. It's an encryption code that has a very advanced algorithm, which means this is the kind of security that has never been provided in a chatting application ever before. And the important and perhaps the amusing thing is a lot of people are wondering whether their chat messages before this encryption was somehow unsafe and could have been accessed. It's not quite as simple as that. Things were pretty safe already, but an extra additional level of security, probably the maximum possible, has now been provided in an application that's being used by over 1 billion people, Gaurav, all around the world. Shiv Arur, for the moment, many thanks for joining me. Shiv and the India Today tech team will continue to track the story very closely. We're getting in an update on NIA officer Tanzeel Ahmed's murder. The police are looking for 2 suspects, according to police sources. The stills of these suspects have been grabbed from the footwork correct. Hi, this is Kohli very Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very